creative piece, right? And वो जल्दी जल्दी करना है, मतलब ये नहीं कि आपको breakneck speed पे अपनी कविता पढ़नी है, लेकिन कविता चाहे एक हो या दो, 4 मिनट में करना है। वो जरूरी नहीं, ऐसे नहीं है कि आप चूज ऐसा कीजिए कि आराम से 4-5 मिनट से ज़्यादा ना करें। सबको करना है। We have to finish on time because Sahitya Akademi has another program after 4. So shall we say that we are starting now? And then, the interesting thing is that we are not going to have any reading. उसके बाद हम थोड़ी सी discussion करेंगे और कैसे ये different है, ये जो आपने सुना होगा उसके ऊपर थोड़ा discussion करेंगे। चलिए पहले हम should we call Sahitya, because you are in a hurry, so we will ask you to speak to us. Can we have your doors closed, please? दरवाजा बंद कर दीजिए please. Can you please close the door? Okay, thank you. Yes, let's pay attention to Kalki. Okay, thank you very much. I am going to read a couple of my poems from my book, We Are Not the Others. This time I chose to read 2 of my poems which I have never read in any of the readings. One is more of a storytelling, and another one is a little bit about the love of a transgender woman with a man, of course, which is an unexplored, the romance between a trans woman and a man is all unexplored yet in our Indian literature and also in our transgender literature, of course. So first, the story of 2. I'm going to read the story of 2. But before that, I also wanted to clarify one thing. There was an unwanted comment from Madhavi TV that I go to America and all that. Well, Rabindra also goes to America. We both go, not just because we have NGOs on all that. We are doing a lot of work. Our literature speaks, our activism speaks, and that is why we are invited to other countries. It is not because somebody else is, an NGO is, or our NGO is sponsoring. Our talent, our activism is honored across the globe and we are invited. And I hope Madhavi understands that, and I wish all her the best. And the story of 2, can I go ahead and read Suprita ji? Yes, please. Go ahead and read. Go ahead. Hello. Yeah, go ahead. Thank you. The story of 2. I was 14 when I heard this story from my Tirunangal Amma. A story of 2, a love that was true, hidden from the world but told to a few. He was born she was born he. They both fled from the fangs of their families to have a life of their own. Free to live, free to love. Then one day, his family found and ripped him away. Their pleading tears and grieving screams were cruelly slammed. Trapped by the vengeful clutches of false pride, he was abducted and taken to be a bride. Robbed of clothes and sari forcefully draped, robbed of clothes and sari forcefully draped, night and day he was mercilessly raped. A string of yellow thread was all that entitled his life to be spread. He got pregnant and tried to end his life. Fearing his fate, she slit herself with a knife. Crushed into a million pieces when he heard, deep inside his core, he was a dead bird. Memories of her beautiful face were all that remained. He carried a stranger within his womb.
he carried a stranger within his womb who twisted endless sorrow and gloom. He ran away to another town in hunger to survive. He sold himself and let his health down. Fate never smiled, but only frowned. AIDS took him down, and in drugs he drowned. Unable to bear and sheltered nowhere, he died on the streets, no one to care. This was a story that the poetry is actually the love story between a trans man and a trans woman. This happened when I was a child. One of my hijab gurus actually told me when I was young that there was this transgender man who was pregnant, and he was actually doing sex work to meet his daily ends, especially to meet his hunger. And he contracted AIDS, and then he died on the streets. Nobody to help him. That was 20, 25, 35 years ago. Countless lives, countless thousands and thousands of transgender people across the world, and of course in our country, have also died without any documentation that we know, without any history that we know. But they have endured so much of pain, so much of discrimination and stigma, and particularly so much of violence. That's why I wanted to document this story of two. Another poetry that I wanted to read is also from a book, of course. Originally written in Tamil. This is in English now. Truth and Life. This is more of a love story about rejection, how she feels when her whole life stumbles and all that. Truth and Life. After he left, I stumbled and gathered my own broken pieces, thinking to myself, why can't this moment of rejection be just a nightmare from which I could wake up? My eyes were streaming with the burning tears, which I couldn't control, and I didn't want to. I didn't have the strength to wipe them away either, but I know I would be okay when he was gone far away. I told you not to out yourself as a trans woman. My parents rejected you. I need them and can't reject them. So I reject you. You spoke. Before you leave, know that my courage has outed your covered eyes. Good for me that I know you now. Get the hell out of my life. I would rather live with the truth and die than live with you as a lie. I am broken, yes, but I will be fine. I am a strong person. I have learned to build myself back. I have always built my pieces back. Maybe it will take some time to get rid of your shadow, but life will flow and I will shine. Thank you. That was my poem, so I've read 2 of my poems. Thank you so much for the opportunity, Secretary. Thank you. Kaki, are you going to be around for the discussion or not? Will it take at least half an hour, ma'am, or It is will it followed by take a this? little more, because all the people who have read, only after that we will have a discussion. Okay. I will still be available I'll inform you even before. All right. If the person will make it, let I me think try. Revati is trying to connect, but she's not able to. I've just sent for someone to come and check. Okay. Okay. Thank you. Right. Thank you. Thank you. So now we move on to the next person who is in a hurry, because I think Suman, you are also leaving earlier. Is that right? So maybe you should then leave first. तो बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा है। 4 मिनट के आप लोग भी पढ़े। उन्होंने पहले भी कम बोला। तो छोटा सा ही है।
होता है बड़ा होकर डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है, पर मेरा खुद का सपना था मुझे खुद को गाना है, यानी अपने आप को जो लड़का बनाना। बहुत मुश्किल के बाद अपने आप से जब मुझे पा लिया मैंने, तब एक इमेजिन जो होता है, जो सपना था कि हाँ बड़ा होके एक लड़का बनना है, बियर्ड वगैरह मुंह में आना चाहिए, सबको सामने एक लड़के के जैसा ट्रीट करना चाहिए सबको। तो जब मुझे अपने आप को खुद पा लिया तो बस सेकंड जो है वो मेरी ज़िंदगी मेरे लिए एक सपना था, जिसमें कल मैं देख रहा था, उसमें आज मैं जी रहा था, जिसको मैं बोलता हूँ सेल्फ मैरिड मैन। मेरी पॉइंट आपने भेजी है शायद। जी तो अभी हम मेरा कहना है नेक्स्ट वी शुड गो टू इज विजय राजन मलिका, because she also has to go earlier than the others. The poetry is Ardhanari. Ardhanarishwara is praised in the applauses of completeness. Ardhanari is etched into the spans of incompleteness. Deva gleams, humans are burnt, just as man on some moon tree. Will life succeed if reborn is God? Can we to sleep with sweet dreams at night? Second is Hindi poem, Khav. मैं अपने बच्चों को बृहंतला शिखंडिनी नाम दूंगी, उनके द्वारा भाषा में हुए खाव ताकत खाव भर जाए। कॉलम से सिमटे बिना नर और मद्दा मात्र न बन, भले मानस बनकर उन्हें बढ़ने दे। कर्क की संध्या में भारत का संविधान पढ़े और बढ़े। Third is a Malayalam poem. മലയാള ഭാഷയെ പ്രണയിച്ച നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ എന്തേ മറന്നുപോയി, മൂന്നാക്കി ആറാക്കി ഒൻപതാക്കി അക്കങ്ങൾ കൊണ്ട് അളന്നുവല്ലോ, കുറ്റിയടിച്ചു കൊളുത്തി വലിച്ചു ആണിലും പെണ്ണിലും തള്ളിയല്ലോ, മോഹങ്ങളും മോഹഭംഗങ്ങളും ചുവരിന്റെ മാറിൽ തൂക്കിയല്ലോ, പൊയ്മുഖ പടമുള്ള പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് ഹൃദയങ്ങൾ പന്തു കളിച്ചുവല്ലോ, ഭിന്നമായി ഞങ്ങളിൽ എന്തുണ്ട് പ്രിയരെ ഭഗ്നകമാക്കിയ സ്വപ്നങ്ങളോ, മുരുക എനിക്ക് കണ്ണട വേണ്ട മുന്തിയ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുപടുത്തു. One more point, that is Dad is a bride. Once Dad left, legs of the chair grew frayed. Whoever sat on it fell down. As Dad turned up as a bride, I didn't know how to address Dad or Mom. Neither told to call as aunt. Mom asked to forget that chapter. Is it mandatory that a wife should be a woman? I don't know. Please tell me. Thank you. जैसे सुन रहे हैं वैसे ही समझ रहे हैं कि कैसे ये पोइट्री अलग है, एंड ये पोइट्री है तो इसको समझना जरूरी है, आइडेंटिटी रिलेटेड, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। तो अभी हम इसके बाद शुड वी गो टू भैरवी। एक बार सभी को पुनः नमस्कार। I'm going to read one of my short story, Lesson Well Taught. In the bustling 8th grade classroom, Prabhu and Samir were classmates but not friends. Prabhu was known for his academic excellence, while Samir was notorious as a backbencher and a schoolyard bully. Samir's favorite target was torment, for torment was Prabhu. One recurring episode involved Samir relentlessly chasing Prabhu on their way to the restroom, making every visit a harrowing experience. The bullying left Prabhu feeling disheartened and isolated, but he never let Samir's antics deter his commitment to his studies. As the 8th grade final examinations approached, Prabhu's dedication to his studies paid off. He found himself seated next to Samir, much to his chagrin. Prabhu, focused and attentive, began answering his questions diligently. On the other hand, Samir was clearly struggling with a particular question that had stopped him. What is the full form of LGBTQIA+? Frustrated and desperate for help, Samir turned to Prabhu, attempting to cheat from his answer sheet. He pestered Prabhu for assistance, but instead of turning him away, Prabhu took a different approach. He showed his answer sheet to Samir, hoping to impart some knowledge and help.
L for lesbian, G for gay, E for bisexual, D for transgender, Q for queer, I for intersex, A for asexual, and plus means there can be numerous genders other than binary genders. Prabhu explained patiently. As the exam proceeded, Sami's view on the world started to shift. We realized that intelligence was not just about academics, but also about being aware and understanding different aspects of life, including supporting the LGBTQIA+ community. The story ended with a powerful message: intelligent people are not just book smarts, but also open-minded, accepting and supportive of diversity, including the LGBTQ community. Those who fail to grasp this concept remain in ignorance. Prabhu and Sami's encounter in the exam hall was a turning point, teaching Sami a valuable lesson about acceptance and the richness of diversity. Thank you. Thank you very much. I think one of the themes which is getting demonstrated is that of diversity. Yes. Yeah, so thank you for introducing us. I think we should go now to Revati, who is on the screen, before we lose her, because she is kind of found herself in place now. So Revati, off to you. हाँ मैं हूँ, रीड करना है? हाँ, पढ़िए। अच्छा, अपने सुबह से हम बात कर रहा था इजरा के बारे में। इजरा बोलेगा तो अच्छी किया, बुरे किया हम बोला था। हम भी इजरा कम्युनिटी में कल्चर में रह के आने वाला है। इजरा कम्युनिटी में जो दो तरीका ऑपरेशन होती है, हम सुबह निर्वाण के बारे में हम बात कर रहा था। उसमें एक डॉक्टर करते हैं, एक दायमा करते हैं। दायमा का निर्वाण के बारे में मैं रिसर्च किया था, उसमें कहानी है, वो थोड़ा सा भी पढ़ेगा, तमिल में पढ़ेगा। மூக்குத்தி கம்மல் வளையல் நகை புடவை பாவாடை ஜாக்கெட் எல்லாத்தையும் அவுத்தாங்க. என்ன அம்மனமா நிக்க வச்சாங்க. என்னுடைய பயம் என்னன்னா, என் கை காலெல்லாம் விடன்னு நடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்படியே அம்மனமா நின்றுட்டு மாதா போட்ட முன்னாடி நின்னேன். அப்புறம் என்னோட தலைமுடியை வாயில வச்சு கடிச்சுட்டு சொன்னாங்க. மாதா மாதான்னு சொல்ல சொல்ல வாயில முடிவுறதால வாய்க்குள்ளேயே மாதா மாதா அப்படின்னு மணங்கிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் என்னோட ரெண்டு கையை பிடிச்சு தூக்கி பின்னாடி பக்கமா மடிச்சு வச்சு பின்டாயமா என்ன சேர்த்து பிடிச்சுக்கிட்டாங்க. என்னால கத்தவும் முடியல, பேசவும் முடியல. மாதா மாதான்னு வாயில புள்ளையும் மணங்கிட்டு இருந்தேன். தாயமா என்னோட ஆண் உறுப்ப இழுத்து பிடிச்சு கட்டிய வச்சு ஒரே அறுப்பா அறுத்து எரிஞ்சிட்டாங்க. வலிக்கவே இல்லை. அறுத்துட்டு உட்கார வச்சாங்க. எரிஞ்சதுன்னா சொல்லுனாங்க. ஒரே எரிச்சலா இருந்தது. அப்படியே நெருப்பு மேல உட்கார்ந்து இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. மயக்கம் வந்துருச்சு. ரத்தத்தை பிடிச்சி என்னோட முகம், கை, கால், உடம்பு எல்லாத்தையும் தேய்ச்சி விட்டாங்க. அப்படி தேய்ச்சா எனக்கு முகத்துல இருக்கிற முடி, கை கால் இருக்கிற முடி எல்லாம் கொட்டி போயிருன்னு மூத்தவங்க சொன்னாங்க. அதனால நானும் அந்த ரத்தத்தை பிடிச்சு தேய்ச்சுக்க சொல்லி தேய்ச்சிக்கிட்டேன். தாய்மா என்னோட கண்ணத்துல பட்டார்னு அடிச்சாங்க. ஏன்னா அன்னைக்கு நான் தூங்கக்கூடாது. தேங்க்யூ. हमें मलयालम समझते नहीं आती है। मल्लिका, आप जानते ना, थोड़ा इंग्लिश में बोल देना शार्ट. That was I was prepared and taking maybe 9 months. And that was that. It wasn't fine. Yes, not bad. All right. Thank you. आवाज, लेकिन आपकी आवाज में रिदम था, इसलिए हमें और भी अच्छा लगा, क्योंकि आवाज अच्छी थी और रिदम था। तो पोइट्री में अगर इंट्रिंसिक बाहर का रिदम ना भी हो, उसके अंदर का रिदम अगर समझ में आने लगे तो कुछ मायना लगता है। ऐसे लगता है आप सच को राधा करती है ट्रांसजेंडर है, उनके पास बैठ के उनका कहानी में लिखा है, वो जो बोला है वैसे लिखा है, और कुछ सेंटेंस नहीं किया। बहुत अच्छा। अच्छा, तो रेवती, थैंक यू वेरी मच। अभी हम देविका, आपके पास कहिए।
going to recite two of my poetries which based on to the gender-based violence and the emotion of the transgender women. Also, I'm going to recite another poem of mine which I have written based on to the empowerment of the women and how the trans women are so empowered and proud, and how we can call ourselves as a proud transgender women. The perspective of this poetry is all about the bravery, the emotions, and the relationship with the nature. So, after taking permission to all of you, I'm going to recite my poem. First, I'm a daughter of Earth. Each and every transgender woman, I think they relate with me, or every trans woman, all the women of this world in the society, we can call ourselves like the goddess Sita, that we are a proud daughter of the land, of the earth. So my poetry based on to the I'm a daughter of a soul, or you can say I'm a daughter of earth. I'm the daughter of the earth, like daughter of the land. I am a filament of freedom. I am a piston of peace. I am a clasp of Confucius. I am the corolla of the people cause. I am the pollen of the prosperity. I am the anther of amicable solutions. I came from dry desert to wet forest. I came from closest to open closed. I come from rainy nights and wake up to rainbows. I come from shackle that blind to the shackle broken. I come from dead silence to the word spoken. I come from paths unknown to paths chosen. I am a human. Now it's my poetry is going to relate with the humanity. Like if we can exclude the gender of the person, now we can go ahead to the humanity. Like the most, I can say the most very effective concept or the things in each and person, which is humanity. So now we can talk, like I have written a few words for the humanity. I am human. I am any image of God. It can be male, female, or the transgender. Coming from my country, fast not easy. Now I am talking about to my India. Democracy, how we are culturally oriented, how we are culturally rich. Not because they chased me away, but my soul needed to. I came from a place where no bones would want to stay. I am a proud trans woman, and I am proud. Thank you so much. And to take one more poem. One poem is like, it's very close to me, and this is a brave woman. Nobody in this world has written something for me, or with my beauty, how I look, how I like, what are the characteristics of mine, how I am presentable, how much I am wise and intelligent, as per as my conception I am telling to you. But I have written something जो मैंने दूसरे के behalf से अपने लिए लिख लिया कि मुझे कोई nobody wants to write for me कि मेरे लिए कोई लिखेगा, but मैंने सोचा कि मैं खुद के लिए कुछ लिखती हूँ जो मेरी खूबसूरती में जानना चाहे. तो उसको मैंने नाम दिया A Bravery Trans Woman. कि Devika is the bravest my eyes have ever seen. Devika is the bravest my eyes have ever seen. A loin bows in a shiver and fear. I am on my knees, for I cannot believe it's dedicated to Shiva. A woman, a Devika, a proud trans woman, so beautiful, among us she breathes. I offer this one. अभी मैं थोड़ी सी I'm feeling very I feeling very like थोड़ा सा very proud कि somebody is going to praise my beauty. So now the second phrase to praising myself with my words to my beauty. I offer this world and everything within to her feet. I offer this world and everything within to her feet. I say proudly that I will protect her with fist. I say proudly that I will protect her with fist. She smiles like I smiles. Then gently, then Devika says to me, I am a woman with the dignity. I am a woman with the beauty. I am a woman more stronger.
and I do not need the protection, for I may seem fragile, but I am stronger than steel. I am stronger than steel. I do not know what words to speak. I don't care about it, what people used to say me, but I would like to say something for me, for I desire her love. The person who is writing for me, that I am writing for the words of mine, so I desire her love and love her miserably, but I have only my heart to offer, and she, Devika, deserves better than me. It does not matter that I love Devika endlessly. Devika lives in a world the devil comes to flee, but yet she stands strong with a smile, shining through like a star, with a laugh musical, poetry to my ears. She is a brave woman. Devika is a proud brave woman. Each and every trans woman is a brave woman, gentle and free. Thank you. I think this is beautiful because somewhere when we are struggling to find ourselves and we find the dignity of being, just being, and so how you begin to regard yourself as beautiful, as you assert yourself because you found the dignity. So that dignity needs to be projected in creative writing when it comes to. Thank you so much. Thank you. So now, should we have Manovi? Go ahead. First time I did my poem in my mother language, Bengali, and then it will be considered by Partha Majumdar in Hindi. Eka, मेरा कविता का नाम है अकेली, lonely. আমি একটা নোম্যান্স ল্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছি। আমি একটা নোম্যান্স ল্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছি। এখানে আমি মানে ডক্টর মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারত মাতার মতো আমি একা, জাতীয় পতাকার মতো আমি একা। একা দাঁড়িয়ে হাওয়ার অভিমুখে আমি প্রাণবন্ত উঠতে চাই। আমি গোটা ভারতের প্রথম এবং একমাত্র সরকারি কলেজ ট্রান্সজেন্ডার ট্রান্সফরমার অধ্যক্ষ। আপনারা ফার্স্ট টাইম এরকম কি বলতে পারেন? ফার্স্ট স্ট্যান্ডা will translate in Hindi. मेरा नाम है पार्थ और मैं मैम का जो कविता है उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँ। कविता का नाम है एका, अकेला। আমি একটা নোম্যান্স ল্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছি। मैं एक নোম্যান্স ল্যান্ড पर खड़ा हूँ। এখানে আমি মানে डॉक्टर मानवी बंदोपाध्याय। यहाँ पर मैं मतलब खुद डॉक्टर मानवी बंदोपाध्याय। भारत मातार मतो আমি একা। भारत माँ की तरह मैं भी अकेला ही हूँ। जातीय पताकार मतो আমি একা। इस राष्ट्रीय ध्वज की तरह मैं भी अकेला हूँ। एका एका दाड़िए हवार अभिमुखे আমি प्राणवंत उठते चाই। मैं अकेला ही खड़े होकर इस हवा की झोंकी की तरफ उड़ना चाहता हूँ। আমি গোটা ভারতের প্রথম এবং একমাত্র সরকারি কলেজে ट्रांसजेंडर ट्रांसफॉर्मर अध्यक्ष। मैं इस पूरे भारत में बस अकेला एक लौता कॉलेज का ट्रांसजेंडर गवर्नमेंट कॉलेज का ट्रांसजेंडर ट्रांसफॉर्मर अध्यक्ष हूँ, मतलब प्रिंसिपल। তাই আমি একা, আমি শূন্য, কারণ আমি একলব্যর মতো রাজস্বিক শিক্ষা গ্রহণে ভারতের তৈরি করা বর্ণ প্রথাকে শ্রেণী বৈষম্যকে আঘাত হানতে চেয়েছিলাম। আমি একা, আমি শূন্য, কারণ আমি একলব্যর মতো রাজস্বিক শিক্ষা গ্রহণে ভারতের তৈরি করা বর্ণ প্রথাকে শ্রেণী বৈষম্যকে আঘাত হানতে চেয়েছিলাম। মূল স্রোত আমাকে দলে নেয়নি,
মূল স্রোত আমাকে দলে নেয়নি, কারণ সে আমাকে সম্প্রদায় হতে বলেছিল। সম্প্রদায় আমাকে দলছুট বুনো হাতির মতো অচ্ছুত করেছে। সম্প্রদায় আমাকে দলছুট বুনো হাতির মতো অচ্ছুত করেছে, কারণ আমি মূল স্রোতের শিক্ষা গ্রহণ করেছি। আমি তাই ভারত মাতার মতো একা। ताई আমি একা, इसीलिए मैं अकेला हूँ। আমি শূন্য, मैं शून्य हूँ, कारण আমি একলব্যের মতো, क्योंकि मैं एकलव्य की तरह राजसिक शिक्षा ग्रहणे ভারতের তৈরি করা বর্ণ প্রথাকে শ্রেণী বৈষম্যকে আঘাত হানতে চেয়েছিলাম। क्योंकि मैं एकलव्य की तरह इस जो राज परिवार घराने का जो शिक्षा है इसके ऊपर आघात करना चाहता, मतलब इसको चेंज करने, इसको बदलना चाहता था। मूल स्रोत আমাকে দলে নেয়নি। ये जो मेन स्ट्रीम है वो मुझे अपने तरफ नहीं लिया, अपने और नहीं लिया, कारण से আমাকে সম্প্রদায় হতে বলেছে, क्योंकि वो मुझे कम्युनिटी की तरफ जाने के लिए बोला। মূল স্রোত বলা, তুমি কমিউনিটি में जाओ। সম্প্রদায় আমাকে দলছুট বুনো হাতির মতো অচ্ছুত করে। ये जो कम्युनिटी होता है, जो मेन स्ट्रीम, वो मुझे अकेला कर दिया। जैसे कि वाइल्ड हाथी जब दलछुट हो जाता है वो अकेला पल जाता है, उसको वो जो ट्रूथ है वो भी नहीं लेता है, संप्रदाय भी नहीं लेता, मूल स्रोत भी नहीं लेता। मैं और इंसान भी उसको मतलब आघात देता है। कारण আমি मूल स्रोतेर शिक्षा ग्रहण করেছি, क्योंकि मैंने इस मेन स्ट्रीम का जो एजुकेशन जो शिक्षा है वो लिया। আমি তাই ভারত মাতার মতো একা, इसलिए मैं भारत माता का अकेला। थैंक यू। 19 में एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट होते हुए भी ये पोएम इसलिए बन रही है क्योंकि ये भले कोई इसके साथ जैसा कोई भी इसके साथ एम्पैथी करे। लिखने का एक ढंग ऐसा है, जो आपके एस्थेटिक्स हैं वो ऐसे हैं कि वो दूसरे को पहुंच रहे हैं, इसी में सक्सेस होती है। ये एक एम्पावरमेंट है, दिस बिकम्स empowering for the person and empowering for the entire community, because what we are looking at is empowering is clapping. Clapping is empowering. Yes. So this is the universal empowering. yeah. So that is where ग्लोबलाइजेशन चाहते हैं, यूनिवर्सल चाहता है, वो देश का हमारा कुछ नहीं मिलता, वो ग्लोबलाइजेशन। और ये एक चीज ऐसी है जो आपने कही है, वो हर एक कोई भी महसूस करेगा, ट्रांसजेंडर या नहीं। आपके केस में ज्यादा होगा, हमारे केस में जैसे मैं अपना मेरी लाइफ स्टोरी अगर मैं बताना शुरू करूं तो उसमें भी बड़ा एंग्विश है, बहुत पेन है। उसको कैसे हमने रियलाइज किया, ट्रांसलेट करने into our writing, that only I would know, and I would be alone in that. So that alone वाला जो आपने किया, that is so beautiful. Each one of us is primarily alone. नजरुल हमारे कवि है, नजरुल भगवान के पद है, भगवान ही कहला है। हाँ, भगवान के कहला है। ऐसी devil भी अकेले। अच्छा, anyway, so let's move on. Thank you so much. Thank you. Now we go on to the कैसे मैं रैंडमली चल रही हूँ, जो दूसरे जैसे बात, ठीक है? आप कोई नहीं किसी का समझना यू, हाँ, अभी आपकी बात है। ये पोएम में डेडिकेट करना चाहती हूँ समवन हूँ आई लव, मतलब मैं किसी से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं सार्वजनिक तौर पर उसको नहीं कह पाती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो दिस इज द टाइम एक मिनट मैं इंटरप्ट करूँ, एक राइटर है ना, तो बड़ी फेमस अर्नेस्ट हेमिंगवे, राइट? अर्नेस्ट हेमिंगवे, उन्होंने कहा था कि द पर्सन हू हैज बीन थ्रू द प्रोसेस ऑफ लव, एक बार उससे ना झलकती पर्सनैलिटी से झलक लगता है कि आपको कहने की जरूरत नहीं है that you were in love or you are in love. So this is dedicated to that person. जब से तुम आए हो जिंदगी में सुबह आ गई, तुम्हारा रोज सुबह मुझे गुड मॉर्निंग करना मेरी मॉर्निंग को गुड कर देता है। तुम्हारा मुझे ये पूछना कि नाश्ता कर लिया है या अभी भी घर का काम कर रही है, ये मुझे बड़ा सुकून दे जाता है।
कोई है जिसे काम नहीं मेरे आराम की करना है। जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ और तुम मेरे पापा बन जाते हो, कहाँ जा रही हो, कब आओगी, इतना देर का क्या काम है मेरे, कोई साथ जाएगा या अकेली ही जा रही हो? अच्छा, पहुँचते ही कॉल जरूर करना, और हाँ, लोकेशन जरूर शेयर कर देना। तुम पापा हो तो नहीं, पर मेरे पापा की याद आती है। सुना था लोग नहीं आते मर के फिर, पर पापा जैसे फिर से आ गए। जैसे ही घर से रिक्शे में बैठती हूँ, तुम कॉल कर देते हो, फिर तब तक फोन नहीं काटते जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाती। तुम परवाह भी करते हो और फिक्रमंद भी हो। तुम पाबंदी नहीं लगाते, तुम मेरे साथ हर पल जीना चाहते हो। मेरी शाम कभी तुम्हारे बगैर नहीं होती। जब सब रागनी में खो जाते हैं, तुम मुझे बैसाखी बना देते हो। तुम बेवजह हंसाते हो और मुझे हंसता देखकर खुद खुश हो जाते हो। कभी जब लड़ती झगड़ती हूँ, तुम सॉरी बोलकर उठक बैठक भी लगाते हो। छत पर धूप हो या सड़क चलते बारिश आ जाए, तुम सिर्फ मेरी आवाज पर कभी खुद को सुखाते तो कभी यूं ही भीग जाते हो। तुम्हारा मुझसे बात करने को बार बार बहाने से बाहर जाना और मेरे मुस्कुराने की वजह बन जाता। तुम रात में माँ के समान लोरी भी सुनाते हो, दूर होकर भी अपनी गोदी में सुलाते हो। जब तक मैं सो नहीं जाती, तुम मेरी पेशानी को कभी चूमते कभी सहलाते हो। मैं तुम्हारा बच्चा तो नहीं, हाँ, पर तुम माँ बन जाते हो। दिन कट जाता है, फिर नई सुबह आ जाती है, पर तुम नए नहीं बनते। तुम तो वही पुराने हो जो मेरे हो, जो मुझे पसंद हो। तुम्हारी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि तुम मेरी पसंद से जीते हो। तुम्हारी सोच विचार तुम मुझ पर नहीं थोपते हो। तुम तो मेरी आज़ादी का भी पूरा ख्याल रखते हो। तुम मुझे प्यार करते हो कह नहीं सकती, पर तुम मुझे देखकर जीते हो, इस बात पर विश्वास करती हो। तो मैं आज क्या करूँ? स्टेटस पर तुम्हारी फोटो नहीं लगा सकती, कुछ भिजवा भी नहीं सकती। बस चोरी चोरी मोहब्बत की पहली सौगात समझ लो। संजना साइमन की कलम से अपने जज्बात को पढ़ लो। यही तोहफा है तुम्हारे जन्मदिन पर मेरी तरफ से। तुम अपनी आंखों में मेरे ख्वाबों को पढ़ लो। ये औरत को ऐसा ही मिले। मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि इस रिश्ते में सारे रिश्ते जुड़े हैं, चाहे माँ, चाहे पापा, चाहे कंपेनियन, बहन, सारा कुछ आगे से मिल जाता है। तो ये लव जो है, experience, also relating to the other in this way. It's a relationship with the other in a very pointed way. Other तो है, लेकिन वो एक other maintain करते करते एक इकट्ठा बन जाता है। मैं कहना चाहूँगी कि अगर एक लेखिका को प्रेम रूपी स्याही मिल जाती है, तो कलम ना मिटने वाली याद रख जाती है, ऐसा मुझे लगता है। एक और पोएम है, ये भी प्रेम रस श्रृंगार रस के लिए आधारित है। ये श्रृंगार रस का वियोग और संयोग दोनों ही दिखा रहा है। श्रृंगार को दो भागों में विभाजित किया गया है, संयोग और वियोग। ठीक है, जब परस्पर प्रेम होता है तो संयोग रस की प्राप्ति होती है, पिछड़ जाते हैं तो वियोग में एक दूसरे के विरह गीत गाते हैं, जिसमें दोनों ही हैं। बात तो नहीं कर रही हूँ मुझसे, कब तक यूं ही भागोगे? प्रेम जो किया होगा तुमने, जितना भागोगे मुझे अपने पास पाओगे। तुम्हारी भाव मुझे विचलित करती है, प्रश्न भी स्वतः आ जाते हैं। भला ये कैसा प्रेम है जो अपने ही अर्थ को करते रहे हो? सुनो, ये पीड़ा जो तुम्हें हो रही है, ये मेरी वेदना का भी प्रमुख कारण है। ये विरह जो न चाहते हुए भी जन्मा है, ये अवश्य था। ये ना होता तो प्रेम का सौंदर्य अधूरा होता।
पर ये विरह यदि ना रुकी तो निश्चिंत रहो, मृत्यु तो अटल सत्य है, जो जन्मा है एक दिन जाएगा। ये विरह भी जाने को ही आई है, विरह मतलब सेपरेशन, ये विरह भी जाने को ही आई है। इस अधूरी बात को अब शब्दों के अभाव में सिर्फ आत्मा समझ पाई है। तुम ना भागो मुझसे दूर कहीं भी, ज्यादा भागोगे तो थक जाओगे, और तुम जब थक जाते हो तो मेरे केशों के सायों में सोने को फिर मुझ तक आ जाते हो। ज्यादा ना भागो नहीं तो थक जाओगे। यदि आना ही है तो जाना क्यों दूर, यदि आना ही है तो जाना क्यों दूर। विरह की रात है तो मिलन का सवेरा भी आएगा। ये समय है माना थोड़ा कठिन, पर ज्यों ज्यों और कठिन होगा अजी कट ही जाएगा। मुझसे प्रेम है तो यूं ना खुद जलो, मुझसे प्रेम है तो यूं ना खुद जलो, ना मुझे जलाओ। चलो अब बात कर लो मुझसे, मैं से हम में हो जाओ, मैं से हम में हो जाओ। एक छोटे से बस 2-3 लाइन का ही पोएम है, मुश्किल 30 सेकंड में खत्म हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पैनल डिस्कशन के लिए कि सबके ये हम सबकी आवाज है जो आप तक पहुंचनी चाहिए साहित्य पात्र तक। नर से निकली नारी, जन्म के समय औलाद पैदा होती है। नोटेड, प्लीज नोट दिस पॉइंट। जन्म के समय औलाद पैदा होती है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ उन्हें बढ़ने दो। परेशान मत हो, निश्चिंत रहो, वो लड़का या लड़की ही बनेंगे, फिर कोई ट्रांसजेंडर नहीं बनेगा। आप खुद ही खुद की बनाई रूढ़िवादी बक्से में औलाद को पालते हो, उन्हें खुद की समझ से और सोच से लड़का या लड़की बना देते हो, और जब वो औलाद खुद को आपके उस कब्रनुमा बक्से में कैद पाती है और छटपटा के जब उसे तोड़ती है तो आप उसे ट्रांसजेंडर बना देते हो। कोई ट्रांसजेंडर खुद से नहीं बनता, बल्कि कोई ट्रांसजेंडर होता ही नहीं है। सच है, खुदा ने सिर्फ नर और नारी को बनाया, सबसे पहले नर और फिर नर से ही निकाल के नारी को बनाया। बाकी सब तो समाज की दत्यारोपी परंपरा, इंसान की नासमझी और परिवार की कट्टरता ने बनाया। एक बार फिर से नर से ट्रांसजेंडर नहीं बल्कि नर से नारी बनी संजना साइमन की कलम। Thank you very much. It was pertinent to the point. तो अब हम शिवांश को कहें, शिवांश आप कहिए। ऐसी कौन सी कविता है जो ट्रांस वुमेन के ऐसी कौन सी कविता है जो ट्रांस वुमेन के दर्द को झलकाती है? और मैं कोशिश कर रहा हूँ पहली बार कि ये रिकॉर्ड भी होगा तो पढ़ रहा हूँ मैं। कविता लिखना और बोलना ये चीज़ मुझे थोड़ा सा अलग लगती है, तो मैं बोलूँगा कैसा मुझे नहीं पता, लिखा है मैं वो बताता हूँ। तो एक ट्रांस मैन की व्यथा जो उनका एक्सपीरियंस है, जो वो फील करते हैं, जहाँ पे और भी जो मेरे भाई लोग हैं वो सब समझेंगे। नारी से निकला नर। बहुत पहले की बात है, एक बच्चे ने जन्म लिया था। चाहते थे सभी की लड़का हो, पर लड़की जैसा पैदा हुआ था। क्योंकि सालों की मन्नतों का फल था वो, तो लड़का हो या लड़की इतना फर्क नहीं पड़ा। फिर दिन बीतते गए, रातें बीतती गई, वो बच्चा बड़ा होता गया। सब खोए थे खुशियों में, सबसे जुदा उसने खुद को पाया। फिर शुरू हुआ टोका टोकी, रस्मों रिवाजों का दौर, ये नहीं करना वो नहीं करना, चार लोगों से डरने का दौर। वो तो बच्चा ही था, क्या करना है और क्या नहीं ये कहाँ उस नादान को समझ आया। जो करना उसे अच्छा लगा, उस मासूम ने तो वही करना जारी रखा। समय बीतता गया, वो बच्चा बड़ा होता गया, उसके साथ साथ उसका अंग भी बढ़ना शुरू हो गया। उसकी उम्र के बच्चे सब बड़े खुश थे,
जिस्म का यूं निखरना सबको पसंद था, पर खुद को बदलता देख ये बच्चा बड़ा ही मायूस और खामोश था। बचपन से सुना था लोगों की खुसर में, ये बच्चा जो लड़की पैदा हुआ कुछ अजीब था। कभी सिसकियों में रोता तो कभी माँ के आंचल में छुपता, दोस्तों सब नकली हंसी हंसता, वो बच्चा जीने का नाटक करता। जब वो बच्चा जवान हुआ वो तो जीना और मुश्किल हुआ। उसकी लड़ाई अब दुनिया से नहीं, खुद के शरीर और वजूद से थी। समय चक्र के जब महीने के वो खास दिन आते, सब नारी शक्ति पूछते, पर अर्धनारीश्वर मन ही मन रोते। जब दोस्त प्रेम की बातें करते, वो बच्चा चुपचाप सुनता। अजीब बेचैनी थी उसके मन में, ना चाहकर भी वो जीता। कभी कुछ तो कभी कुछ करके हंसाता था वो सबको, पर बंद कमरा करके वो खुद रोता गया। एक सवाल था अब उसके जहन में, कोई बता दे अब ये उसे, उसकी जिंदगी क्यों सबके जैसी नहीं है, अपने खुदा से वो पूछता गया। बहुत साल लगे ऐसे जीने में उसे, पर एक दिन आया उसके सवालों का जवाब लेकर। उसने जाना कि वो अलग तो है पर अजीब नहीं, वो खास है, खुदा के पास है, ना तो बीमार है ना लाचार है। आज वो खुश है खुद को पाकर, खुद से मिलकर, खुद को जानकर। खुद के लिए तो जीते हैं इस दुनिया में, खुद के लिए तो जीते हैं सभी इस दुनिया में, दूसरों की खुशियों के लिए जीना ये बच्चा सबको बतलाता गया। बहुत बढ़िया। और इसमें सारा दर्द भी खुद के आ रहा है, लेकिन रियलाइजेशन भी, ये भी समझ में आ रहा है कि एक रियलाइजेशन है कहाँ पे मैंने अपने आप को ढूंढा है। और वो अजीब नहीं थी, बीमार नहीं थी, लेकिन हूँ। तो ये बहुत बढ़िया। क्या मेरे पास और समय है? ये मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी परेशानियों को सामना करते हैं। हमसे बोला जाता है कि तुम कलम को हमें धुतकारते हैं, घृणा करते हैं। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अगर इस कलंक को लेके हम लोग जीते हैं तो ये अच्छी बात है कि हर किसी की जिंदगी में कलंक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि छोटे बच्चे से लेकर आज बड़े इंसान तक मैं ये देखता हूँ कि किसी का नंबर कम आ गया, ठीक है, तो वो खुदकुशी कर लिया, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, वो खुदकुशी कर लिया। क्यों? क्योंकि उसके परसेंटेज कम हो गए और बच्चों से। मैं देखता हूँ किसी की लाइफ में इतना प्रॉब्लम चल रहा है, डिवोर्स हो गया, बीवी धोखा देके चली गई, उसने बहुत अच्छे से जाके खुदकुशी कर ली, तो किसी की गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, किसी के बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया। लेकिन एक जो ट्रांसजेंडर का जो मतलब कहते हैं ना कि इंसान, भगवान हर किसी को सब कुछ नहीं देते, जो उसके लायक होता है उसी को भगवान देते हैं। तो मेरे हिसाब से यही है कि जब हम लोग पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद जब सारी चीजें हम लोग करते हैं, एक से दुख मिलता है, दूसरे से दुख मिलता है, तीसरे से दुख मिलता है, हर रिश्ते में दुख मिलता है, फिर भी वो सारे बोझ को लेके हम फिर भी जी रहे हैं, हम मरने का नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उम्मीद है तो जिंदगी है, तो उसी बेस पे मैंने लिखा हुआ है, जीना इसी का नाम है, ईश्वर की बनाई एक अनमोल रचना है हम, हमें अलग अजूबा कहने वालों तुम्हारे जैसे इंसान हैं हम। लाख घृणा करो, लाख धुतकारो, लाख ताने मारो, फिर भी तुम जैसे ही हैं हम। नहीं है कुछ अलग हमारे अंदर, नहीं है कोई भेदभाव हमारे अंदर। ईश्वर ने जिस प्यार से आपको बनाया, उसी प्रेम से संवारे गए हैं हम। जहाँ लोग परेशानियों का सामना करते हुए मौत को गले लगा लेते हैं, वहीं एक के बाद एक परेशानियों से लड़ते झगड़ते जीते हैं हम। न जाने क्यों फिर भी आपको पसंद नहीं आते हैं हम। आपके हर ताने और हर गाली को नजरअंदाज करके आपको खैर और बरकत की दुआ करते हैं। जिंदगी जी रहे हैं सभी रो रो के, लाख गमों में भी जिंदगी को हंसते हुए जीना सिखाते हैं। So much hope in this, so much of need and investing of faith. So yes, Disha. मैं बहुत बार पॉलिटिकल ज़्यादा बोलती हूँ, नॉन पॉलिटिकल। आज हल्दी लगने वाली थी उसे,
शादी के मंडप में काला चश्मा पहनकर बैठा था वह, रात में रो कर लाल की आंखों की सूजन छुपाने के लिए। बार बार लग रहा था उसे मरने दो सालों को, सब छोड़कर चले जाता हूँ यहाँ कहीं, पर हिम्मत ना हो पा रही। माँ की रोटी हुई आंखें जाने नहीं दे रही थी उसे दहेज लाओ। अपने पैदा होने का कर्ज चुकाने के लिए रुक गया वह शादी के मंडप में। बाप रोया उसके सामने, मेरी इज्जत का लिहाज कर ले बेटा। हर वक्त यही बात याद आ रही थी रह रहकर, और दूसरी तरफ अलग ही कहानी शुरू हो रही थी। दुल्हन से ज्यादा खूबसूरत तो वह लग रही थी। उसे पता था आज या कल ये तो होने ही वाला है, और उसके बावजूद वह उसकी शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। जी भर कर आखिरी बार उसे देखना चाहती थी, चाहे फिर घर आने के बाद रोना क्यों ना पड़े। एक हाथ में ढोलक, एक के हाथ में घुंघरू थमाकर 4-5 हिजड़ों के साथ निकल पड़े उसके घर के बाहर से ही आवाज दिया उसने, है क्या कोई घर में? आ गई बारात आपके आंगन में। ठकाठक ताली ठुकी उसने, घर वाले दौड़ कर आ गए आंगन में। पर वो बहुत सहमा डरा हुआ, सबके सामने कोई तमाशा न हो जाए इस डर से चुपचाप उसे देखता रहा दूर से। अरे दीदी, आप अंदर तो आओ, चाय पियो, आपको खाली हाथ थोड़ी भेजेंगे। ऐसा कहते हैं उसके साथ आए हिजड़ों की टोली एक घर के अंदर। उनके पीछे वह भी अंदर निकली, कभी मन की मन मुस्कुराई उसकी दहलीज लांघते हुए। पता नहीं कि उसके कानों पर शहनाई की गूंज सुनाई। वाह! चाय पीकर उठी और उसने दूल्हे की बलाएं ले ली। दुल्हन की ओर मुड़ी और मन ही मन बोली, आज तेरी झोली में मेरा प्यार डाल रही हूँ। रो भी तो नहीं सकती मैं, क्योंकि रोने का अधिकार नहीं है। ऐसा सोचते हुए उसने दूल्हे की बलाएं ली और दूल्हे के माँ ने 200 की नोट दी हाथ में। तब उसको अपनी औकात किया, कुछ संभालते हुए पैरों में घुंघरू बांधे और तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा से शुरुआत की झूमकर गाना गाकर इस कदर नाची वो कि घुंघरुओं का दम घुट गया। उसके बाप ने बहुत पैसा लगाया, सारा पैसा इकट्ठा किया और मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे मत जाना गाते निकली हो। जैसे ही उसके सामने से गुजरकर घर के बाहर आ गई वो अपनी जगह से उठकर आया दरवाजे पर, जैसे भूल गया हो खुद को। फिर रुक गया चौखट पर। जब उसने मुड़कर देखा, उसकी आंखों में देखकर कहा उसने आंखों से, लाज रखी आज मेरी तूने, तेरा शुक्रिया। चिल्ला रहा था वो मन ही मन में, तू ही मेरा पहला प्यार है आज भी। पर उसने फिर से मुड़कर नहीं देखा। अपना पल्लू कमर पर कसते हुए ठकाठक तालियों की गूंज में अपने आंसू को छुपाकर वह निकल पड़े। आज होश में नहीं थी, आज वो अपने आंसू को पीकर निकली थी, इसलिए नहीं देखा उसने पीछे मुड़कर, नहीं देखा उसको। ये मराठी में बहुत बड़ा थोड़ा सा मराठी It's like a story. मेरी फ्रेंड के ऊपर लिखी थी मैंने। मुझे ढूंढना पड़ेगा मराठी में। तो एक हिंदी की कविता है, वो मैं बताना चाहती हूँ, वो अलग कविता है जरा।
पॉलिटिकल कविता है। वो मुझे गौर से देख रहे हैं, वो मुझे गौर से देख रहे थे। माथे पे बिंदी थी, बदन पे साड़ी थी, गले में मंगलसूत्र थी, और वो मुझे कैद समझ रहे थे। क्या किसी का ईमान पे होना इन चीजों से तय होता है? मैंने कलमा पढ़ा, सूरे सुनाए, वजू और नमाज का तरीका भी बताया, फिर भी उन्होंने मुझे सजदागाह में जाने से रोका। क्या मेरा अल्लाह लिबास से बंदा पहचाना है? जो बैठे थे वहाँ खुद को रसूल के गुलाम कहते हुए मेरी वजह से नीयत खराब होने के और नमाज पूरी ना होने के दाखिले देने लगे। क्या मेरे नबी के गुलामों का दिल इतना छोटा और नीयत का इरादा इतना कमजोर? चलो माना मैं काफिर, चलो माना मैं काफिर हूँ, फिर भी अल्लाह से डरती हो। आप तो उसी के बंदे हो। मैं वो जिस हालत में अगर मिला लूं कंधे से कंधा उसके सजदे के लिए, तो गलत क्या है? और गलत है भी अगर, तो उसे गलत कहने वाले आप हो कौन? सफेद कपड़े में छुपे दागों को वो जानता है, कौन बंदा और कौन सा? आपसे मराठी पोएट्री सुनना था, हिंदी सुनाए नेक्स्ट टाइम सुनेंगे या फिर बाहर सुना लेगा? मराठी में भी मैं बाहर सुनाऊंगा, पक्का सुनाए। बहुत मराठी में तो ये जो मेरे कविता का जो बुक बना है, इसका मराठी पोएट्री का ड्रामा बना है, घंटे सारी कविताओं का सीक्वेंस लगाकर ट्रांसजेंडर लाइफ की 1 घंटे का ड्रामा बना है। और उसका कलकत्ता में एक शो हुआ जिसके लिए हम लोगों ने कुछ कविताएं हिंदी में की, और वो हिंदी में वो ड्रामा अजान साहब कहाँ है? देखते क्यों नहीं? कोई बात नहीं, गीत आया था। कविता पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जज्बात आपके दिल तक पहुँचाने की कोशिश कैप्चर कर लूँगी। अभी ठीक है जी। आप माइक बंद कर दीजिए। जा रहा था मंजिल की तरफ अपनी, मैं बढ़ रहा था मंजिल की तरफ अपनी, पर मुश्किलों ने राह मेरी घेरी, चल गई तेज मुश्किलों की अंधेरी। लगा मुझे मंजिल मेरी गुम हो जाएगी, पर अचानक पता नहीं क्या करामात हो गई। एक पेड़ की परछाई मेरे पीछे आ रुक गई, उसकी शाखों ने मुझे छुपा लिया। कुछ देर के बाद अंधेरी बंद हो गई। उस आंचल में जैसे मेरी मुश्किल हल हो गई। क्या देखा मैंने फिर मंजिल मेरी मेरे नजदीक हो गई। उस परछाई का शुक्र करना चाहा मैंने, पर इतने में वो परछाई कहाँ खो गई। है उम्मीद फिर मुझे मिलूंगा उसको, अब मेरी मंजिल वो हो गई। आज फिर चल रहा हूँ मैं, बढ़ रहा हूँ मंजिल की तरफ अपनी। ये मतलब जब मेरी कश्मकश चल रही थी, समझ नहीं आ रहा था, कहीं से एक मुझे सहारा मिला अपनी आइडेंटिटी को पहचानने का, उस वक्त ये मैंने लिखी थी। एक और आगे पढ़ रहा हूँ, अगली जो मेरी कविता है। मैं तय कर रहा हूँ आज भी जिंदगी का सफ़र, मैं तय कर रहा हूँ आज भी जिंदगी का सफ़र, या जिंदगी तय कर रही है मुझे। समझ नहीं पा रहा हूँ इस कश्मकश को, अजीब फलसफा बन रहा है दुनिया का। हर रिश्ता अलग से अलग हो रहा है दुनिया का। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस कश्मकश को, दर्द भरी है जिंदगी मेरी, या दर्द ही जी रहे हैं मुझे। दर्द भरी है जिंदगी मेरी, या दर्द ही जी रहे हैं मुझे। अजीब अफसाना है ये दर्दों का, ना चाहते हुए भी गा रहा हूँ तुम्हारा। अजीब अफसाना है ये दर्दों का, ना चाहते हुए भी जो गा रहा हूँ। जी जनाब क्यों जगह ले गए हैं ये धोखेबाजी, मक्कारी, रिश्ते और प्यार की, समझ नहीं पा रहा हूँ। अजीब मजाक है इनका, प्यार को क्यों ये चिढ़ा रहे हैं। अजीब मजाक है इनका, प्यार को क्यों ये चिढ़ा रहे हैं। और इस कश्मकश में मैं फंसा हूँ, ना आगे बढ़ पा रहा हूँ। इस अदला बदल को समझ नहीं पा रहा हूँ, पर हाँ
बस यूं ही तय कर रहा हूँ जिंदगी का सफर, जिंदगी का सफर। एक लास्ट छोटी सी और पढ़ देता हूँ, बहुत कम टाइम लेगा ये वाला। ये मैंने एक जगह पहले भी पढ़ी थी, उम्मीद है ये भी आपको पसंद आएगी। ये बहुत लोग अपने साथ को रिलेट भी करेंगे इस इन 4 कपल लाइनों को। आपने मेरी जिंदा दिली देखी है, आपने मेरी जिंदा दिली देखी है, नहीं देखा वो मेरा रोना, वो हंसना, वो गिरना, संभलना, मेरा वो टूटना, वो समेटना। देखी कहाँ है, देखी कहाँ है मेरी वो जीने की चाहतें, वो जीने की हसरतें, वो मरने की चाहतें, वो बिगड़ना, वो बनाना। कहाँ देखा है आपने, आपने तो बस देखी है मेरी जिंदा दिली, देखी है मेरी जिंदा दिली। थैंक यू। अंदर ही अंदर क्या हो रहा है? जो ये चीज, ये लाइनें ये थी कि मतलब लोग देखते हैं आज खड़ा हुआ उस अजान को जो 4 लोगों में बैठ के बात करता है, अपने जज्बात रखता है, पर उस अजान को किसी ने नहीं देखा, वो दर्द किसी ने नहीं देखा जब वो सुसाइड के लिए भी सोचता था। ना वो अपनी माँ को कुछ कह पाता था, ना अपने बाप को समझा पाता था। ये रियलिटी तो है ना, ये रियलिटी है। जी। और कविता का यही लिखने का एक तो होता है फायदा होता है, तो यही है कि आपकी अंदर की रियलिटी खुल कर आती है, अपने आप खुलती है, सबकॉन्शियस टेक्स होगा और वो तो ये जो मल्टी लेवल होता है ना, अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं एक लेवल पे सबके साथ हंस रहे हैं, ये कर रहे हैं, अंदर पता नहीं क्या क्या चल रहा है, अंदर की रियलिटी जो है वो बड़ी होती है। ये कितने लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, जब कविता लिखने बैठो सब एक करके अंदर से ही निकलता है, तो वो एक सबकॉन्शियस जो है जहाँ सब जाके मिलता है, उसको अगर हम खोल के रखते हैं तो वो जैनरल कविता एक बनता है, अंदर की खिड़की खुलती है। तो चलिए फिर हम चलते हैं फिर से आके में नॉर्थ ईस्ट सेक्टर। This is for when I request you to ask some staff to use this in the system. I wanted to display the cover of my system. Is there anyone who can do that? That will make sense because the point that going to read out is common. ये पेन ड्राइव से उधर प्रोजेक्ट हो सकता है? पेन There is a file on the other side. You go there. You want to display before reading? Before reading? No, I will start reading. Yeah, you start reading. Me, with my heritage, my Academi जैसे मैंने कभी बोला, ये मेरा धर्म और मेरा कास्ट है और ये मेरा हिजरा समुदाय जिस नाम का नाम है। तो इट्स इंक्लूड देवी का जो मैंने नाम रखा, धीरे माता अकादमी शर्माबाई ग्रामीण में रही और मंगलामुखी एक्सपेंशन। इट इज अ पूरा एक So, this is a very long poem. It's a narrative poem. I have taken out an excerpt from the introduction of that long poem and incorporated it in my memos so that I would be able to relate the pen and also the pride of that sparrow. Sparrow
Yellow sparrow, and you'll find one cover there. First or second? There. कवर लिखा है ना The last one. Cover. Yellow cover. फ्रंट कवर Front cover. So, let's you know the last one you can नीचे वाला सबसे नीचे वाला Does the back cover go back to the last one? You have to change it. No, the last one. लास्ट Yeah, वाला last हाँ one. ये वाला Yeah. हाँ So this is the front cover of my book. It's a collection of my memos. So this book introduced with a prologue. It's called The Yellow Sparrow. So the name of my memos itself is taken out from that narrative poem. So the poem was born when I encountered a broken-winged sparrow in my courtyard when I had conflict with my father. So that was how I depict that as a story and bring it into my stories, into my character. And the prologue goes like this. In the eaves of a thatched house, there was a nest of sparrows. The straw of the roof kept the nest warm. When the rays of the morning sun shone through the thatch, the sparrow chirped merrily, welcoming the new day. Among the sparrows, there was a mother sparrow and a hatchling. Every day, the mother sparrow would pluck out the feathers from her child's tender body with her sharp beak. The innocent young sparrow cried out. Each time, the beak pierced him, but he did not know why. His mother was causing him so much pain. Like other sparrows, he wanted to fly out of the nest to seek food and play with his friends. But the mother forbade him from playing in the company of others, and his featherless body left him handicapped. He could not fly and had lessness. She would be calm when he was beside her. The young sparrow never asked the reason for her inexpressible pain, and the mother kept her worries buried. His heart was filled with disappointment, and he saw other birds flying in their colorful flocks. His heart was filled with countless queries. Why? What defect of nature or accident has caged me inside the nest? Why does my mother spread her wings over me and keep me unseen and unheard from the world outside the nest? With each new day, the mother plucked more feather, 1 to 10, 10 to 20, until she finally reached the corner of the young sparrow's eye. Unable to bear the pain, the young sparrow finally voiced its protest. But the apprehensive mother plucked more feather. Thus, new conflict were born between the mother and the child and grew intense like a blazing wildfire. One day, through tears, the mother said, "You are different from the other sparrows. Your innocent body is spewing a host of yellow feathers, incessantly, alarmingly. Your yellow feather has spreading all over your body to the corners of your eyes. I have lost the courage to pluck your feather anymore. Unlike any other sparrow, you are born with yellow feather. My worries have come to nothing. They will ostracize you from the rest of the flock. You will live friendless and lonely for the rest of your life." Thus the mother wept as she related her sorrow. From that day onwards, the young sparrow came to know his tragic self with the burden of uniqueness.
He lived his life lonely and isolated. He could not keep hidden as time went by. He gazed his own feeder, the mother nature had made unique. The golden hue of the yellow feeder reflected clean and bright. Though drenched by the cold winter rain, the yellow sparrow fell in love with his own molten loveliness. The yellow feather, they were shone by the world, golden and glorious. A breath of joy escaped from his beak, and he brought into a happy song, my feather are the yellow bird, I'm the yellow sparrow. Whoever saw him called the yellow sparrow. The yellowness became his identity. This can be related to anybody who being treated differently, and it's all about celebrating the pride for me. Yes. Excellent. So it's again the question of identity and how there is this aloneness. So actually a lot of stuff that was read today is to deal with how you are finding yourself and how you are first finding yourself and then how you are wanting acknowledgement from others, because the identification has happened. How are you defining your identity? This is a very, very basic question. And I think mankind or humankind, I shouldn't even say mankind, humankind is dealing with that all the time. Whether it is a child, it is the assertion of what am I, who am I? Yeah, that is a very basic question. And then defining it, the moment it gets defined, the irony of the whole thing is, होता ही है कि जब आप कहने लगते हो ये मैं हूँ, उतनी देर के कुछ और बदलाव आ जाता है, और वो लाइफ लॉन्ग एक सिलसिला चलता रहता है कि आप हर वक्त अपने आप को डिफाइन करते हैं, तो वही उसको सेल्फ रियलाइजेशन भी कहा जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन। और यहाँ पे जब ट्रांसजेंडर रियलिटी की बात है तो थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ये एक ऐसा इन वन सेंस माइनॉरिटी हो जाता है जो कि दूसरों को इतनी समझ नहीं आती है। They don't understand how to identify the yellowness of the yellow. बेसिक बात तो वही है, yellowness कैसे समझे, तो ये आप लोगों के काम से ही समझ में आएगा। और इस वक्त में हमारे पास सिर्फ 10 मिनट और है, इस 10 मिनट में मैं चाहूँगी अगर कोई आपका बेसिक, लेकिन ये सोच के प्लीज कीजिएगा, क्योंकि बहसें तो बहुत हो सकती है इसमें, लेकिन हम सिर्फ ये करें कि जिस आपने कुछ सुना है उसमें से अगर कुछ उभर के आ रहा है, समथिंग दैट यू फील यू वांट टू आस्क द राइटर कि ये आपके दिमाग में कैसे आया, ये क्यों है, इसका मतलब क्या है, इस टाइप की बात हो सकती है, उसी दायरे में रहें, ज़्यादा इधर उधर की बात करने में कोई फायदा नहीं है। हम ऐसा एक जरूर मौका ढूंढेंगे कि जब से जनरल इश्यूज पे भी हम बात करें, और वो एक बड़ा सेमिनार होगा, 2 दिन का होगा, और उसमें फिर एक सेशन में एक समस्या लेते हुए उसमें जुड़ेंगे, बात समझ आएगी। तो अब आप द फ्लोर इज ओपन, 5-10 मिनट का टाइम है। There is a Shivain, he is a transgender man and he is also writing. So he want to recite one shairi, Urdu poetry for me for 1 minute, if you will allow. सिर्फ 4-5 लाइन में है। Hello everybody, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आप सबने बहुत अच्छी पोएट्री सीखी है, बहुत अच्छा लगा आप सबको सुनकर, और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपने जैसे मैंने अपने दिल की बात आप लोग के मुँह से सुनी मैंने, तो बहुत अच्छा लगा। और बाकी मैं शिवेन प्रेजा हूँ और मैं लखनऊ से हूँ, और मैं एक सिनेमेटोग्राफर हूँ, वेडिंग सिनेमेटोग्राफर, एंड मैंने धर्मा प्रोडक्शंस में भी वर्क किया हुआ है विद करण जोहर, और मैंने बस उस पर लिखा, मैंने हिम्मत पे लिखा है, जो लोग जैसे हमारे कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो बहुत जल्दी हिम्मत आ जाते हैं, जो हमारी लड़ाई होती है समाज से, हमारे परिवार से, और हम सब्र नहीं रख पाते और हम बहुत जल्दी हिम्मत आता है, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, तो उस पर मैं कुछ अर्ज करना चाहूँगा। थोड़ी हिम्मत रख, अपनी बात रख, कोई ना सुने तो ऊंची अपनी आवाज़ रख, ये खुदगर्जों की दुनिया है, सबको अपनी पड़ी है, तेरा कोई नहीं रखेगा, तू खुद अपना ख्याल रख।
थैंक यू सो मच। कुछ है पावरफुल बनाना एम्पावर करना तो दोबारा कर सकते अपने आप को खुद को बनाएं ताकि हम दुनिया में बैठे we can fight the battles of the world. थैंक यू। बताइए और किसी को कुछ पूछना हो कुछ कहना हो, दिशा आप कुछ कहना चाहिए? मुझे ऐसे लगा कि आपके अंदर कुछ है कहना। मराठी के लिखने वाले और कुछ ट्रांसजेंडर है, मेरी फ्रेंड है शर्मिला की, जो मराठी की बहुत कॉम्प्लिकेटेड कहा जाता है जिनको कवि ने ग्रेस उनके ऊपर PhD कर रही है, तो अपने इस प्रोग्राम से उससे भी जोड़ना चाहूँगी, अगर आप चाहो तो उसको कॉन्टैक्ट करें। ये एक्चुअली मैं सभी को कहना चाहूँगी कि और भी जो नाम आप कहना चाहते हैं ये परसेप्शन बिल्कुल ना रखिए, क्योंकि ये जहाँ से शुरू हो रही है बात वो ऐसा इंसान है कि मैं जानती नहीं ट्रांसजेंडर राइट, तो करना चाहती हूँ कि कुछ हो जगह बने, तो इसमें जो हमें जो सुझाव आते हैं जो दिल्ली में रहते हैं जैसे कि संजना या और, तो हम उनको बुलाते रहते हैं, कई बार बुलाया बताइए और उनको के बारे में बताइए, तो जो जो नाम हमारे पास आते हैं हम उनको शामिल करना चाहते हैं इसमें। हम आर्काइव्स जो क्रिएट करना चाहते हैं देवता, वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है कि 5 people, 10 people, 15 people, वो 1000 तो अच्छा है, और भी सारी भाषाओं से जितने भी निकल के आते हैं थोड़ा सा यहाँ मैंडेट ये है, थोड़ा सा इसको ख्याल रखें क्योंकि ये लिटरेचर का दायरा है, तो लिखने वालों की बात आ जाती है, लेकिन लिखने वाले जो है वो सारे इश्यूज को डील कर रहे हैं, तो इट्स ओके लिखते हैं जो मैंने जो उसने कहा तो नाम की ट्रांसजेंडर का जो प्रोग्राम हो रहा है, तो ट्रांसजेंडर का मतलब है इंटरसेक्स और ट्रांस मेन भी, ट्रांसजेंडर का पूरी जो ये लिटरेचर है इसका तो पाकिस्तानी बहुत होती है ये पहले मैं तो आर्काइव बनाना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ उसका पब्लिश from the Sahitya. Yes, we are your. You can call me Sukrita. So I want to ask and I want to suggest you और मेरा भी request है कि you have seen the जो हमने पढ़े के लोग जहाँ पे करते किया है. We have a transgender man, transgender woman, intersex person, HR people. पर एक ऐसा तबका है जो आज भी भिक्षावृत्ति में इन्वॉल्व है, वो आज भी 5-10 रुपए के लिए सड़क पे खड़े है ना, बाजार छोड़ के आई। हाँ तो अपनी बट आपको एक सेकंड मैं अपनी बात कंप्लीट करूँ फिर आप बोलिएगा। विशाली आपने बहुत नाम कमाया है, यू आर इन द ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र, यू आर वेरी फेमस पर्सनालिटी इन महाराष्ट्र, आप जेंडर राइट्स के लिए काम करते हैं, आप दलित राइट्स के लिए काम करते हैं, आपको आपको मानवी जी को, विजय राजमल्लिका जी को और सावित्र जी को एंड मनी मोर जो पीपल हैं और रंजीता दीदी जो नहीं है आज लक्ष्मी जी करी वो पीपल उनको एक स्पेस मिल गया है, वी गॉट द प्लेटफॉर्म, चाहे उनकी करें हमने हार्डवर्क से वो प्लेटफॉर्म पा लिया, पर क्या हमने गिने चुने 2-5 लोगों ने पाया उनका क्या जो आज भी लाल बत्ती पे खड़े होकर पास मांग रहे हैं, और यू वोंट बिलीव मैम मैं आपको सच बताना चाहती हूँ इस वीकेंड अगर खोजेंगे फॉर द हिजरास कल्चर का जो साहित्य है, हिजरा ट्रेडिशन में इफ वी गेट अबाउट द किंडर कम्युनिटी जो बैकिंग का काम करते हैं वो बैकिंग नहीं करते हैं, दे आर डूइंग बधाई, जो पहले बधाई था तो अभी सोपर बैकिंग हो गया है, तो दे हैव अ वेरी गुड बहुत अच्छा उनके पास कहते हैं इतना बढ़िया मैटर है, इफ वी गेट अबाउट लाइक रिलीजियस एस्पेक्ट से आप ले लीजिए गुरु चेला परंपरा जो आज भी सुरक्षित है इन द आज वी डोंट फाइंड द गुरु चेला गुरु शिष्य परंपरा इन एनी अदर, मतलब सोसाइटी में तो खत्म ही हो गया, बट यू फाइंड अ वेरी यूनिक वे इन द विचार बनाना कि आज भी गुरु के संस्कार वो शिष्यों में है, तो उनका एक साहित्य है। अब अगर हम बात करें टॉक अबाउट द कर्नाटका रीजन, वी कैन टॉक अबाउट द महाराष्ट्र रीजन, जोगती जो कल्चर है हमारा जोगती जोगपालसा, दे हैव अ वेरी बिग मंत्रास, बहुत बड़ा रिलीजियस साहित्य है जिसमें माता रेणुका देवी जी ने हम यलम्मा बोलते हैं उनकी आरती उनकी पूजा भक्ति करने का इतना बड़ा साहित्य है कि मुझे लगता है अगर उसको हम स्पेस देते हैं इन एंशिएंट राइटिंग्स तो एक बहुत कौतूहल का भाव रहेगा, ऑल्सो दे विल गेट एक्नॉलेजमेंट दैट ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें चाहिए, तो आप हमारा लिंक बनाइए
सोच जो कि दे सकता है। और मैं एक और इसके आगे भी एक बात करूँगी, यही इसी पर हम नहीं कहीं करेंगे। जैसे मिथ्स अबाउट एनर्जी, मिथ्स अबाउट, वो कनाडा में और होंगी, मद्रास में और होंगी, आपके उसमें क्या में और होंगी, मिथ जो ओरल ट्रेडिशन में और एक चीज और मैम, हम ट्रांस कम्युनिटी की डिवोशनल जो एक देवी है जिन्हें हम गॉडेस बहुचरा माता बोलते हैं, ये ट्रांस कम्युनिटी वर्शिप टू मदर गॉड, जिनमें एक है माता रेणुका देवी विच इज कॉल्ड यरमा, जिन्हें हम भगवान परशुराम की माता के रूप में भी जानते हैं। वन इज अ लोक देवी विच इज कॉल्ड माता बहुचरा देवी। तो जब बहुचरा देवी में मैं भी रिसेंटली टू द गुजरात और महसाणा में जो वहाँ पे उनका शक्तिपीठ है, वो चारण समुदाय, चारण घराना जो देवी पूजक समुदाय है उसकी वो बेटी, वहाँ से वो आपकी लोकल गॉडेस कह सकते हैं। और वो शक्तिपीठ है, वहाँ पे when they started worshiping, तो इतने मोटे मोटे ग्रंथ उनके ऊपर लिखे गए हैं, और वो ग्रंथों में दीवान संस्कृत और लोकल गुजराती कच्छ वाला लैंग्वेज जो है, हाँ, तो इतना सुंदर वो हमें मिल जाएगा। जैसे कब आवाहन किया जा रहा है, माँ प्रकट हो रही है, एंड वन वहाँ पे रिचुअल से जिसे डाकला बोलते हैं, मेरी गुजराती पीपल लोग डाकला, जिसमें देवी को जगाने के लिए दे रिसाइट द पोएट्रीज, जिसमें वो बहुत पोएट्रीज पढ़ते हैं और वो देवी को जगाते हैं। तो इस तरह का साहित्य जो रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग आज की सिविलाइजेशन नहीं है, वी आर मोर देन 5000 ओल्ड सिविलाइजेशन, तो ये होना चाहिए। आप सबके पास, जिसके पास भी ये मटेरियल एक्सेस हो सकता है, मिथ्स पर आप मंदिर की मेहनतों से दे देंगे। आपके महाराष्ट्र में जो भी आपके पास मिथ्स हो, ऐसे जो ओरल ट्रेडिशंस में है, they may not even have been written, but translate them, get them translated। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो हम स्पेशल इशू भी निकाल रहे हैं, कुछ एक पन्ने जो है हम इसके लिए जो myths regarding transgender, अब ट्रांसजेंडर के अंदर ये सारा तो आप फिर उसको बैठ के हम सेलेक्ट करेंगे आपकी ही हेल्प से, क्योंकि हम नहीं जानेंगे कि उसको छांटना कैसे, यू विल हैव टू हेल्प अस विद दैट, राइट? तो इसीलिए आपसे ही हमारे पास आएगा तो वो बेहतर है। एंड नॉर्थ ईस्ट का बहुत होगा, there must be lots in और बागी साहब को one second, I'll tell you, बागी साहब आपको मैंने कहा था ट्राइबल एरियाज में, ये ट्राइबल्स आर नॉट इन ट्राइबल, तो मैं इनको कह रही थी कि आप ट्राइबल एरिया से लेके आइए, कुछ जरूर होगा, सब ओरल ट्रेडिशंस पे है ना, होगा कैसे नहीं होगा, very much in the community and also in tribal community, we are very much into this community now. So will you be able to do that from North East? Can you do that? Yes. Just give us 5, 6, whatever number. I know हम सारा we will not be able to publish everything, but archives. No, and also in archives. We will keep it in archives. I have some material. I already have some material which I can submit. So please do that. वो जो ट्रांसजेंडर का अलग महाभारत है, अलग रामायण है। She asked me that you have different epic of Mahabharata. There is just an announcement I have been told to make here that there is an award ceremony at 4:30. 4 o'clock. Okay. 4 o'clock is the tea. 4:30 is at Triveni. Triveni, you know where Triveni is? After the market. In the market, but close to the market, not in the market. But dancing 5 minutes walk. 5 minutes walk. 5 minutes walk. So there is an awards there. वो awards हैं for children's literature, बच्चों के literature. तो वो awards के लिए अगर शामिल होना चाहेंगे तो जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। हाँ बताइए। So the Rabindra Sahitya Akademi had organized a prayer fest. That was actually 1 year back, and we are actually producing a book, an anthology of collections of different kinds of literature of poet communities. Poet, yeah. Oh, no, thank you. I'm leaving you. Thank you.
alternative go, some other people go on a go. This is almost over. Unless anybody has anything to say. I want that we should be a group protest. Let's all have a group photo.